કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા મોહન ભાગવતના નિવેદનની ટીકા કરી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતને સાચી આઝાદી અયોધ્યા રામ મંદિરમાં રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના દિવસે મળી હતી। રાહુલ ગાંધીએ મોહન ભાગવતના આ નિવેદનને દેશદ્રોહ ગણાવ્યું હતું। નવી દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની નવી ઓફિસ ઇન્દિરા ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યા પછી પાર્ટી કાર્યકરોને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, ભારતને 1947માં સાચી સ્વતંત્રતા મળી ન હતી। તે મોહન ભાગવતની ટિપ્પણી આપણા સ્વતંત્રતા સંગ્રામ પર હુમલો કરે છે। આ લડવૈયાઓનું દરેક ભારતીય નાગરિકનું અપમાન છે અને આપણા બંધારણ પર હુમલો છે। રાહુલ ગાંધીએ આરએસએસના પ્રમુખ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે મોહન ભાગવત દરરોજ 2-3 દિવસમાં પોતાના નિવેદનથી દેશને એમ જણાવતા રહે છે કે સ્વતંત્રતા આંદોલન બંધારણ વિશે તેઓ શું વિચારે છે। તેમણે તાજેતરમાં જ કહ્યું કે તે દેશદ્રોહ છે, કારણ કે તેમના નિવેદનનો અર્થ એ છે કે બંધારણનું કોઈ વ્યાજબીપણું નથી, તેથી બ્રિટિશરો સામેના સ્વતંત્રતા સંગ્રામનું કોઈ મહત્વ નથી। મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે અયોધ્યામાં રામલલ્લાના અભિષેકની તિથિ પ્રતિષ્ઠા દ્વાદશી તરીકે ઉજવવી જોઈએ, કારણ કે ઘણી સદીઓથી દુશ્મનોના હુમલાઓનો સામનો કરી રહેલા દેશને આ દિવસે સાચી સ્વતંત્રતા મળી હતી। And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. And so the last thing I would like to say is that this building has emerged from the blood of Congress people, and not just Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel ji, not just these people. It has emerged from the blood of our workers, from every single one of our leaders. That includes all of you who are today defending the idea of the Congress party. Everybody in this room is under severe assault defending the ideas of the Congress party. Sometimes we forget it. But these people in this room are facing systematic attack and assault on their lives because they are in the Congress party. And they are not surrendering to the BJP and the RSS. And in the same way, thousands of workers are there. But there are also thousands of people who believe, millions of people who believe in the Congress ideology. They're sitting outside the Congress. And that is why, the same way this building has emerged from the soil of our country, from the blood of our leaders, from the blood of our workers, this building, the idea behind this building must also reach the corners of our country. That is the duty of this building. That it does not just remain a building, that the ideas that are inside this building reach the corners of our country. Reach Tamil Nadu, Kashmir, Northeast, Gujarat, Andaman, Lakshadweep, every corner of our country. This idea has to be propagated from this building. जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं।
आपको मालूम है, आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। आदरणीय चंपत राय जी, समिति के सभी माननीय पदाधिकारी, आदरणीय ताई जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम, कृष्ण, शिव, ये क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, दिल्ली।